Hello students. In previous video you have learnt factorization of polynomial by splitting the middle terms. Today I go to exercise 3. In this exercise there are many questions are alike. So I want to teach you different questions from this exercise. For example, first question is x square minus 3x minus 4. As I taught you in previous video, at the place of a there is no other numbers, so coefficient of x square is 1 and constant term is minus 4. So AC equal to 1 into minus 4 is equal to minus 4. Factor of 4 is equal to 1, 2, 4. Out of these factors, you have to choose any two factors whose sum is equal to minus 3 and product is equal to minus 4. As I taught you, this sign tell us what will be the sign of two factors. Since here we have negative sign, it shows that out of two factors, one factor must be negative. But the sign of B is minus. It shows that out of two factors whose absolute value is greater must be negative. So if we take 4 and 1, so we have to take minus 4 and plus 1. So x square minus 4x प्लस एक्स माइनस 4, हमको इसको स्प्लिट करना है. स्प्लिट करने पर हमारा जो सम होना चाहिए वो इसके इक्वल ही होना चाहिए. इफ it comes different, it means your solution is wrong. So out of these four terms we choose two terms at first. Out of two terms common factor is x. कॉमन हम कैसे लेते हैं? जब जो चीज़ दोनों में रहती है. इसमें अब बचा क्या? x बच गया और इसमें माइनस 4 बच गया. यहाँ आपको x माइनस 4 मिला और यहाँ x माइनस 4 ऑलरेडी बच रहा है. तो आपको यहाँ पर हमको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए हमको प्लस 1 लेना पड़ेगा एज अ कॉमन फैक्टर x माइनस 4. सो योर सॉल्यूशन विल बी x प्लस 1 x माइनस 4. Now we come in question number 6. Question number 6 is minus y square plus 35y plus 156. We have to apply the same process. In this question, a equal to minus 1 and c equal to 156. So AC equal to minus 1 into 156 is equal to minus 156.
b equal to 35. Factors of 156 is equal to 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 26, 39, 52, 78, 156. Out of these factors, we have to choose any two factors whose sum is equal to 35 and whose product is equal to minus 156. Since the sign of 156 is a negative, it shows that out of two factors, one factor is negative. Now, whose absolute value is greater? Negative sign factors or positive sign factors? It tells us B. The sign of B is plus 35. That's why positive factors must be greater. So we choose 39 and 4. Minus y square plus 39y minus 4y plus 156. In these two terms, we have y as a common. Taking y as a common, we get minus y plus 39, and taking 4 as a common, we have minus y plus 39. So y plus 4 minus y plus 39. इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 39 माइनस 39y माइनस 4y plus 156, taking minus y as a common. Since we take minus sign outside, that's why it sign will be changed inside the bracket. So it is a minus y, so it become plus y. It is a plus 39y, it becomes minus 39. Similarly, taking minus 4 as a common, we have left y minus 39. So minus y minus 4, y minus 39. Both are the same. Don't worry, both are the same. You are free to choose any one method. चाहे आप प्लस वाई कॉमन ले लें, चाहे माइनस वाई कॉमन ले लें, आंसर गलत नहीं आएगा. यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ y प्लस 4 है, यहाँ माइनस वाई माइनस 4 है. So if we take minus sign outside, you will get y plus 4 and 39 minus y. Now both are the same. Now question number 8.
Question number 8 is 12x square minus 24x plus 12. Here a equal to 12, b equal to minus 24, c equal to 12. So AC equal to 12 into 12 is equal to 144. Now b equal to minus 24. Factors of 144 equal to 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 72 and 144. Out of these factors we have to choose any two factors whose product is equal to 144 and sum is equal to minus 24. As I said in previous questions, it decide what will be the sign of factors. Since it is a positive, it means out of two factors either both are negative or both are positive. Since b is negative here, that's why we have to take minus 12 and minus 12. So x square minus 12x minus 12x plus 12. Taking 12 as a common factor, 12x as a common factor, x minus 1 left inside the bracket. Taking minus 12 as a common factor, we have ax minus 1 inside the bracket. 12x minus 12 and x minus 1. Taking 12 as a factor, common factor, x minus 1 and x minus 1. आप यहाँ देखोगे कि हमने 12x कॉमन फैक्टर लिया तो यहाँ x is 2 times here, so 1x is remaining, but here if 12x is divided by 12x we get 1. Here since we have x minus 1 in first bracket, so here must be x minus 1. So that's why we take minus 12 as a common. आप जानते हो कि माइनस कॉमन लेने से इधर के ब्रैकेट के अंदर के साइन सभी का चेंज हो जाता है. जैसे माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स हो जाएगा और ये प्लस 12 है तो माइनस 1 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार हो जाएगा. यहाँ आपका 12 और 12 दोनों फिर कॉमन मिल गया हमको, तो हमने 12 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 और x माइनस 1 बच गया. तो ये आपका फैक्टराइज हो गया. अगला क्वेश्चन आपका है √3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 √3. इसमें हम √3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 √3, a इज इक्वल टू √3, c इक्वल टू 6 √3, b इक्वल टू 9.
AC इक्वल टू √3 इंटू 6√3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 सिंस √3 इंटू √3 इक्वल टू 3. So factors of 18 equal to 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Out of two factors we have to choose any two factors whose sum is equal to 9 and whose product is equal to 18. Since sign of 18 is positive, it shows that the sign of factors must be either negative or positive of both factor. Since B is positive, that's why both factors must be positive. So we know that 6 plus 3 is equal to 9 and 6 into 3 is equal to 18. So √3y square plus 3y plus 6y प्लस 6√3. यहाँ पर हम √3y कॉमन ले लेते हैं. √3y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y प्लस √3. Here taking plus 6 as a common factor, y plus √3 is left inside the bracket. Since 3 is equal to √3 into √3, √3 और √3 का इंटू 3 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो आपका 3 था इसको हमने रूट में कन्वर्ट किया तो √3 इंटू √3 हुआ. एक √3 बाहर चला गया तो एक √3 बच गया आपका. अब आपका √3y प्लस 6 एंड y प्लस √3. अभी आपका ये फैक्टराइज होगा. √3y प्लस 2 इंटू 3 y प्लस √3. √3y प्लस 2 इंटू √3 इंटू √3, क्योंकि 3 को हम रूट में कन्वर्ट करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा. y प्लस √3. टेकिंग √3 एज अ कॉमन, y प्लस 2√3 एंड y प्लस √3. इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फैक्टराइज होगा. सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, आप करने की कोशिश करिएगा. यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बता सकते हैं. थैंक यू.